Hello students, this is your Shashank sir and this is the solution to revision test day 8 chemical control and coordination. First question, their statement, there are special chemicals acting as hormones and provide chemical coordination, integration, regulation in the human body. This is correct. Hormones which interact with membrane bound receptors normally do not enter the receptor but generate primary receptor. Nay, if they are not entering the cell, they will generate what? A secondary messenger. They will generate what? A secondary messenger. So statement 1 is correct, but statement 2 is wrong. Okay, coming to the next question. You have to select the correct option. Okay, right? The neural and endocrine system work together to regulate physiological functions of the body. This is correct. Hormones are secreted in large amount. No, they are secreted in trace amounts. They are secreted in trace amounts. So this is wrong. Okay. Okay. Invertebrates have a simple endocrine system as compared to vertebrates. This is correct. So option हो जाएगा आपका 1. Only A and C. Coming to the next question. Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers. This is correct. Hormones are produced in trace amount. This is also correct. Okay. So both of them are correct, but this is not the correct reason for the assertion. So this is option number 2. Coming to the next question, read the following options and correct the correct one. Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amount. This is correct. Endocrine system alone coordinate and regulate physical. In alone to nahi hai. In with the help of what? Neural system. It also needs the neural system. So this is wrong. Okay. Hypothalamus forms the basal part of diencephalon. This is correct. Somatostatin and hypothalamus in release of growth hormone from the pituitary. This is also correct. So how many of the statements are correct? 3. Okay, again read the following statements and which of them are correct. The hypothalamus is located in the forebrain and forms the basal part of the diencephalon. This is correct. Hypothalamic hormones reach the pituitary gland through a nerve to nerve synapse only. Hypothalamic hormones reach the pituitary gland through a nerve to nerve synapse only. This is wrong. If the hypothalamic hormones we are talking about, say, anterior pituitary, if you're talking about anterior pituitary, you have the hypophyseal portal system, right? You have the hypophyseal portal system. If you're talking about posterior pituitary, right, direct nerve endings are there, okay? So there is no synapse involved, right? So this statement is wrong. Releasing hormones from hypothalamus inhibit the secretion of pituitary hormones. Releasing hormones कभी भी inhibit नहीं करेगा, inhibiting hormones inhibit करेगा. So this is wrong. ठीक है. Somatostatin stimulates the release of growth hormone. No, somatostatin stops या फिर inhibits. Somatostatin inhibits the release of growth hormone pituitary. So this is also wrong. Gonadotropin releasing hormone promotes the release of gonadotropin of pituitary. This is correct. So option क्या हो जाएगा आपका? Option हो जाएगा only 1 and 5. Coming to the next question, GnRH is a hypothalamic hormone in reproduction. Okay. Acts on in reproduction, it acts on kismet. Okay. Now anterior pituitary gland stimulates the secretion of LH vasopressin. Vasopressin तो नहीं होगा, LH and FSH होगा. ठीक है. So LH and vasopressin तो posterior pituitary का है, तो ये तो गलत है. Testis in male, ovary in female stimulates the release of gametes. Testis in male नहीं. GnRH acts on what? LH and FSH, and LH and FSH only acts on testis and ovary. So this is wrong. ठीक है. Anterior pituitary gland and stimulates the secretion of LH and FSH. This is correct. Posterior pituitary gland stimulates the secretion of LH and vasopressin. Again, this is wrong. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 3. Coming to the next question, oxytocin is also called the milk ejecting hormone. Is correct because oxytocin stimulates the smooth muscles contraction in mammary glands. This is also correct. So both of them are correct and is the correct explanation. So 7 का 1 हो जाएगा. Hormones from hypothalamic nuclei are produced by neurosecretory cells. Hormones from hypothalamic nuclei are produced by neurosecretory cells. This is correct. Hypothalamus secretes both releasing and inhibiting hormones. This is correct. Hypothalamus is a part of hindbrain. Hypothalamus is not the part of hindbrain, rather it is a part of the forebrain. So this is wrong. So option क्या हो जाएगा? Only 1 and 2. Okay, adenohypophysis consists of 2 portions, pars distalis and pars intermedia. This is correct. Neurohypophysis stores and releases 2 hormones called oxytocin and vasopressin, which are actually synthesized by hypothalamus. This is also correct. Now both the statements are correct, but that is not the correct explanation. The option हो जाएगा आपका 2. Coming to the next question, which of the following hormone is mismatched? Mismatch बोला है. अच्छा, adrenocorticotropic hormone stimulates adrenal cortex. This is correct. Oxytocin
स्टिमुलेट्स वाटर नहीं, ऑक्सीटोसिन तो नहीं, ये क्या होता है? ऑक्सीटोसिन इस पार्चुरेशन में या फिर मिल्क इजेक्शन में चाहिए होता है, तो ये गलत है। एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन तो एडीएच कर सकता है, एल्डोस्टेरॉन करवा सकता है, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड मिल्क प्रोडक्शन, दिस इज करेक्ट। टीएसएच प्रोमोट्स द सिंथेसिस ऑफ थायराइड, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 2। नाउ melanocytes, MSH, melanocyte stimulating hormone acts on melanocytes and regulates the pigmentation on the skin. This is correct. Pars intermedia secretes only one hormone called melanocyte stimulating hormone. This is also correct. Both the statements are correct, but it is not the correct explanation. So option हो जाएगा आपका 2. Now, oversecretion of GH stimulates abnormal growth in the body, leading to gigantism. Yes, in young stage होने से ये होता है. Low secretion of GH results in stunted growth in perineum. This is also correct, but both of them are not the correct explanation. तो option हो जाएगा 2. Coming to the next question, two hormones synthesized in hypothalamus and transported in pituitary gland. अच्छा, hypothalamus and transported in pituitary gland through portal transport and direct release. Okay, oxytocin and ADH portal circulation के थ्रू तो जाता नहीं है, so this is wrong. Okay, ADH and thyroid stimulating hormone. Now oxytocin does not go through portal circulation, इसलिए मैंने ये पहला वाला wrong कर दिया. ADH axonal transport हो सकता है, right, because antidiuretic hormone directly posterior pituitary में लगा हुआ है. Thyroid releasing hormone, yes, thyroid releasing hormone can go through portal circulation, yes, hypophyseal portal system से होके जाता है, तो this is correct. एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन नहीं, ATH एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक एंटीरियर पिट्यूटरी वाला है, तो ये वाला तो नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगेन रिलीजिंग हार्मोन, ये पोर्टल सिस्टम से जाएगा, तो ये रॉन्ग है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 2. ऑप्शन हो जाएगा 2. Coming to the next question, an impairment affecting synthesis or release of ADH. ठीक है, ADH diminishes the ability to kidney conserve the water, leading to water loss and dehydration. This causes diabetes mellitus. Diabetes mellitus नहीं बोलते, insipidus बोलते हैं, insipidus, राइट, डायबिटीज इंसिपिडस होता है, सो ये वाला तो गलत है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, दिस इज करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन ओवर सिक्रेशन इन एडल्ट्स कॉजेस जाइगेंटिज्म. नहीं, ये रिवर्स है. ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन इन एडल्ट्स कॉजेस एक्रोमेगाली एंड इन चिल्ड्रन इट कॉजेस जाइगेंटिज्म, सो ये वाला रॉन्ग है. LH in females induced ovulation helps to maintain the corpus luteum, this is correct. FSH in males along with androgen testosterone for regulatory spontaneous, this is also correct. तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 2. Only 2 and 3 are correct. Now statement 1, acromegaly may lead to serious complication and premature death if it's unchecked, this is correct. Thyroid stimulating hormone synthesis and secretion of thyroid hormones from the thyroid gland, this is correct. So both these statements are correct. Okay, malfunctioning of the endocrine gland deviates. Malfunctioning of the endocrine deviates the body from homeostasis, causes several reasons. Which of the following is the correct measure? Okay, gigantism, hyposecretion. Gigantism hyper होगा, hyper growth. Dwarfism hypo होगा, ठीक है. Okay, acromegaly, hypersecretion of growth hormone, this is correct. Gigantism, hypersecretion of somatostatin, no, this is wrong. So option क्या हो जाएगा? 17 का 3. Coming to the next question, a posterior pituitary hormone stimulates vigorous contraction of the uterus at the time of childbirth. Okay, obviously oxytocin का काम ही है ये, so this is correct. Pituitary gland releases vasopressin which helps in childbirth. नहीं, vasopressin childbirth में नहीं help करता है, this is wrong. So option क्या हो जाएगा? 3 if assertion is true but reason is false. Vasopressin is also called as diuretic hormone. Vasopressin is also called as diuretic. Diuretic नहीं है, diuretic means loss of water. Vasopressin क्या है? Anti diuretic hormone, right, which prevents water. तो ये गलत है. It increases the loss of water through urine. नहीं, it decrease, ये क्या करेगा? Decrease करेगा. So both of the statements are wrong. Option 4, read the following statement and find out which are the correct ones. ठीक है, melatonin secreted by the pineal gland helps maintaining the body's 24-hour biological rhythm, this is correct. Pineal gland disorders are the primary hyperthyroidism. नहीं, pineal gland थोड़ी है, वो तो thyroid gland का है, तो ये गलत है.
Melatonin affects not only the sleep cycle but also reproductive and metabolic function. This is correct. Menstrual cycle help करता है, right? The pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain. This is also correct. तो option क्या हो जाएगा? Option हो जाएगा 3. Coming to the next question. Select the incorrect statement. Sleep and wake cycle is pigmentation primarily regulated by hypothalamus. This is wrong. Pineal gland करता है, तो ये गलत है. ठीक है. Insulin plays a major role in glucose homeostasis. This is correct. There are about 1 to 2 million normal human beings. This is also correct. Adrenaline increases and pupillary dilation. This is also correct. तो incorrect statement क्या हो जाएगा? Incorrect statement is statement number 1. Okay. Assertion. Hypersecretion of thyroid hormone causes creatine. नहीं, hypersecretion नहीं होता है. Hyposecretion causes thyroid hormone causes creatinism. This is wrong. Hypersecretion of thyroid hormone causes stunted growth. नहीं, hypersecretion of growth hormone causes stunted growth. So both of them are wrong. ठीक है. Both assertion and reason are false. Exophthalmic goiter form hypothyroidism नहीं है. Exophthalmic goiter hyperthyroidism के लिए होता है. ठीक है. Each thyroid follicle is composed of follicles and enclosing cavity. This is correct. So statement number 2 is correct, but 1 is wrong. So this is 1. Deficiency of iodine in diet results in goiter. This is true. It is because iodine is essential for the normal rate of hormone synthesis of thyroid. This is also correct. So both of them are correct and this is the correct explanation. Iodine नहीं होगा, right? Hormone synthesis thyroid नहीं होगा and deficiency of iodine would lead to goiter. So this is correct. Coming to the question. Okay. Thyroid gland plays a negligible role in metabolism. Negligible नहीं, very important role play करता है. ठीक है, तो ये गलत है. Thyroid gland secretes T3 and T4 hormones. This is correct. The lobes interconnected with a thick flap. Thick flap नहीं होता है, thin flap of connective tissue होता है. So this is wrong. The thyroid gland is composed of 2 lobes which are located on either side of the trachea. This is correct. Due to cancer, the thyroid gland development of nodules in thyroid glands, the rate of synthesis of secretion thyroid is increased. This is also correct. So how many of the statements are correct? 3 statements are correct. Okay. Coming to the next question. Cretinism is a result of hyperthyroidism. नहीं, hyper नहीं होता है, hypo होता है. So this is wrong. In females, hyperthyroidism can lead to irregularities in menstrual cycle. This is correct. Hyperthyroidism can lead to weight loss, anxiety, exophthalmic goiter. This is correct. Thyroid hormones influence the metabolism of carbohydrates, proteins, and fats. Glucogenic effect करता है. So this is correct. So which of the following statements are? How many are the correct? 3 are correct. Okay. Coming to the next question. Correct statements निकालने को बोला है. Parathyroid hormone increases calcium level by promoting resorption. Yes, by dissolution या फिर आपका demineralization करके ये क्या करता है? ये reabsorption करता है. This is correct. PTH is secreted by anterior pituitary, works antagonistically with it. PTH is secreted parathyroid gland secrete करता है. This is wrong. Right? Parathyroid glands are located on the posterior side of the thyroid gland. Yes, thyroid के पीछे में. आप if you remember, thyroid का 2 लोब होता है trachea से, right? On the back side of the thyroid, you will have on the back side of the thyroid, on the 2 lobes of the thyroid, ठीक है? You will have this. हमारा क्या रहता है? हमारा parathyroid gland, which is the posterior position, the back side. Posterior position बोलेगा तो ये this is the back side. ठीक है? Clear है? Okay. So this is correct. And PTH also includes calcium reabsorption from kidneys and intestine. This is correct. So how many of the statements are correct? 3 statements are correct. Coming to the next question. Which of the following does not depict correct function? It stimulates the release of calcium by renal tubule. This is correct. Increases calcium release from digested food. This is also correct. Inhibits the process of bone dissolution. नहीं, inhibit तो नहीं करता है, ये promote ही करता है. ये promote करेगा. Right? So it is wrong. Promotes the process of bone dissolution. This is correct. So 28 का हो जाएगा 3. Okay. Coming to the next question. Question number 21. Right? PTH is a hypercalcemic hormone. It is a hypercalcemic hormone because it increases the blood calcium level. So both of the assertion reason are true and this is the correct explanation. 29 का 1 हो जाता है. ठीक है. Now coming to the next question. 30. Both thyroid and parathyroid hormones secrete hormones that control the concentration of what? Calcium होगा. Right? The amount of this is decreased by whom? Thyrocalcitonin and increased by parathormone. ठीक है. तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 1. राइट. पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन को पैराथायरॉयड हार्मोन करेक्ट है.
right? Insulin glucagon exhibits antagonistic opposite effect on the blood glucose level. This is correct. So both of them are correct, but correct explanation तो है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा 2. Thymosin plays a significant role in differentiation of T lymphocytes. Obviously cell mediated immunity भी कराएगा. This is also increase the production of antibodies and provide human immunity. This is also correct. So ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा all of the above. Okay, coming to the next question, immune response of the old person becomes weak because thymus degenerates in the old person, and since it is responsible for the immune system, right? तुम्हारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसके पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है. सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. Okay, coming to the next question, right? Which of the following are correct? Thymosin promote the differentiation of T lymphocyte antibody production. This is correct. The thymus is located behind the sternum between the lungs on the dorsal side नहीं, ventral side होगा. This is ventral side. So this is wrong. The thymus gland is well developed in elderly individuals. Well developed नहीं, ये degenerate हो जाता है. This is also wrong. Degeneration of thymus reduces thymus level, weakening the immune system in old age. This is correct. So option हो जाएगा. How many of them are correct? 2 statements are correct. Okay. Read the following statements. Adrenaline and noradrenaline are secreted by adrenal medulla. Adrenal medulla and are called emergency hormones. This is correct. Glucocorticoids are secreted by adrenal medulla. नहीं, adrenal medulla नहीं, cortex. Adrenal cortex, तो ये गलत है. Cortisol helps in anti-inflammatory response, supports kidney and cardiovascular. This is correct. Catecholamines like adrenaline increase the heart rate, stimulate glycogen breakdown. Yes, glucogenic effect करता है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका 4. 3 statements are correct. Okay. Coming to the next question. Fight or flight reaction causes direct activation of क्या करेगा? Fight or flight करेगा तो adrenal medulla से epinephrine, norepinephrine, adrenaline, noradrenaline ही increase होगा. तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा है. पैराथायरॉइड ग्लैंड्स नहीं है, किडनी नहीं है. ओके, एड्रिनल मेडुला लीडिंग टू द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन. दिस इज करेक्ट. पैनक्रियास भी नहीं है. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 का 3. ओके, सिक्रेशन ऑफ कैटाकोलामाइन्स सिक्रेशन होगा तो क्या होगा? अलर्टनेस बढ़ेगा. ठीक है, अलर्टनेस बढ़ेगा, प्यूपिलरी डायलेशन बढ़ेगा, पाइलोइरेक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज स्वेटिंग होगा. ठीक है, राइट, इंक्रीज स्वेटिंग होगा. Right, so it is pupillary dilation, piloerection, increased sweating, and this is a new word, decreased peristalsis. तो ये हमारे किताब में डायरेक्टली नहीं है, बट आप ये याद रखिएगा. ठीक है, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ कैटाकोलामाइंस, राइट, द डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस या फिर गैस्ट्रिक मोटिलिटी रिड्यूसेस. ठीक है, तो डाइजेशन प्रोसेस या फिर गैस्ट्रिक मोटिलिटी रिड्यूसेस, तो जितना भी एनर्जी कंजर्व होता है वो बॉडी के अदर पार्ट्स को दे दिया जाता है. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एनर्जी सो दैट द बॉडी कैन यूटिलाइज द मैक्सिमम एनर्जी. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Emergency hormones increases alertness, pupillary dilation, piloerection, sweating, etc. Catecholamines also stimulate the breakdown of glycogen. This is correct. So both of the statements are correct. Okay, again, some answer the following. Correct statement निकाला है. Addison's disease results from the underproduction of hormones by adrenal cortex affecting carbohydrate metabolism. This is correct. Aldosterons help in regulate sodium reabsorption, maintain oxygen pressure and blood volume. This is correct. Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis, lipolysis, proteolysis, inhibit cellular uptake and utilization of amino acids. This is also good. So 39 का 4, all of them are correct. Okay, coming to the next question. Glucagon stimulates. Glucagon क्या stimulate करेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा. ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, वो इंसुलिन करता है. सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल, दिस बोथ आर किसका फंक्शन है? इंसुलिन का. ठीक है, तो ये गलत है. राइट, नाउ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इन 3 लेयर्स, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलस. दिस इज करेक्ट. कॉर्टिसोल इज ए प्राइमरीली मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है. This is a glucocorticoid. This is wrong. Now, small amounts of androgen secreted by adrenal cortex contribute to development of secondary sexual characteristics in puberty. This is correct. So, how many of the statements is correct? 1 and 3 are correct. Okay. Now, हमको क्या करना है? Match the following करना है, and आपको incorrect match दिखाना है. Incorrect match दिखाना है आपको. ठीक है. Right. So, beta cells of the pancreas insulin करता है. This is correct. Zona fasciculata cortisol देता है. दिस इज करेक्ट. फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड कल्चर, फॉलिकुलर सेल्स नहीं, पैराफॉलिकुलर सेल्स. दिस इज पैराफॉलिकुलर सेल्स, तो ये गलत है. जक्सटामुलर सेल्स होते हैं एरिथ्रोपॉइटिन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 42 का हो जाएगा 3. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. How many of the statements are correct? Again, right, the pancreas, both an exocrine and endocrine gland with endocrine function carried by islets of Langerhans. This is correct.
इंसुलिन इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, नहीं, इंसुलिन क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा, तो ये गलत है। ग्लूकागोन इज ए हाइपरग्लाइसेमिक और promotes glycogenolysis and gluconeogenesis, this is correct. Insulin facilitates cellular glucose uptake and glycogenesis leading to decreased blood sugar, this is correct. So how many of the statements correct? 3 statements are correct. Next is glucagon is a hyperglycemic hormone because it increases blood glucose level, so both the statements are correct and it is the correct explanation. Insulin increases blood glucose level, wrong, decrease करेगा, right? It promotes gluconeogenesis, नहीं, ये glycogenesis promote करता है, glyco promote करता है, ठीक है। So both of them are wrong, so both of them are wrong. Okay, which of the statement correctly differentiates glycogenolysis from glycogenesis? Glycogenolysis is breakdown of glycogen, glycogen का तोड़ना है, और glycogenesis is the formation of glycogen, ठीक है, राइट। सो ग्लाइकोजेनोलाइसिस फॉर्मेशन तो नहीं होगा, ये गलत है। ग्लाइकोजेनेसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज ट्रिगर्ड बाय इंसुलिन, इंसुलिन तो नहीं होगा, ग्लूकागॉन ही होगा, तो ये वाला गलत है। ग्लाइकोजेनेसिस इज द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन, दिस इज करेक्ट। एंड ग्लाइकोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सट्रेट्स, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है, दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ये वाला भी गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा 46 का 3। ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अगेन करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। डायबिटीज मेलिटस इज कॉज्ड बाय हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो नहीं हाइपर होगा, ये हाइपर होगा, तो ये वाला गलत है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन वर्क एंटागोनिस्टिकली टू मेंटेन ग्लूकोज होमोस्टेसिस, दिस इज करेक्ट। इन डायबिटीज मेलिटस ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कीटोन, दिस इज करेक्ट। इंसुलिन डिक्रीजेस ग्लूकोज सब्सट्रेट बाय, इंसुलिन इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज थोड़ी करेगा, तो ये वाला गलत है, तो कितना करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हार्मोन करेक्ट मैचिंग करना है। ग्लूकागॉन बीटा सेल्स नहीं है, अल्फा सेल्स है, ये गलत है। वैसोप्रेसिन हाइपोथैलेमस इंक्रीजेस डायरेसिस नहीं, डिक्रीज करेगा, ADH, दिस इज रॉन्ग। एडेनोकार्टिक एंटीरियर लोबर पिट्यूटरी सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकस और एड्रेनल कॉर्टेक्स, दिस इज करेक्ट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी, so ये गलत है। So 48 का क्या हो जाएगा, 3, 48 का 3। Now read the following statements and how many of them are correct। फिर से, testis secretes androgen like testosterone which regulates secondary sexual characters, correct है। Androgen stimulate the development of male accessory sex organs and promote spermatogenesis, this is also correct। Androgens are produced by Leydig cells located inside the center, inside नहीं होता है, वो outside होता है, they are outside, so ये गलत है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, only 1 and 2। Androgen produces anabolic effect on protein and carbohydrate metabolism, this is correct, right। Progesterone plays a major role in maintenance of pregnancy as well as mammary glands development lactation, this is correct, so both the statements are correct। Okay, again study the correct and select the correct option। Estrogen is primarily produced by corpus luteum ovulation, नहीं, एस्ट्रोजन का फॉलोइंग होता है डेवलपिंग फॉलिकल्स के साथ, तो ये गलत है। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी एंड स्टिमुलेट्स मिल्क सेक्रेशन ऑफ मेमरी, दिस इज करेक्ट। एस्ट्रोजन इज रिस्पांसिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स सच एज हाइपोथायराइड, दिस इज करेक्ट, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। Coming to the next question, study the statements given below and select the correct options। Study the statements below and select the correct options। Progesterone acts on mammary glands and stimulate the formation of alveoli, this is correct। Estrogen regulates sexual behavior, development of secondary sex organs in females, this is correct। Corpus luteum secretes progesterone which is essential for maintaining pregnancy, this is also correct, so all of them are correct। Okay, atrial natriuretic factor lowers the blood pressure by preventing vasoconstriction, नहीं, dilation होता है, dilation, so this is wrong। Erythropoietin secreted by the kidney and stimulate the formation of red blood cells, this is correct। ANF is secreted when blood pressure increases and causes dilation of blood pressure, this is also correct, so 4, only B and C। Hormones are also secreted by tissues that are not endocrine glands, this is correct, right। Kidneys secrete hormones, atrial नहीं, किडनी क्या secrete करता है, एरिथ्रोपोइटिन secrete करता है, so assertion is true but reason is false। Come to the next question। Cholecystokinin stimulates secretion of bile juice from pancreas, this is wrong। Gastrin promotes secretion of HCl and pepsin in stomach, this is correct। Secretin acts on pancreas and stimulates secretion of water। Exocrine pancreas होता है specific, but yes pancreas भी correct ही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, B and C, ऑप्शन हो जाएगा B and C।
Coming to the next question, atrial wall of our heart secretes peptide hormone which is decrease the blood pressure. Yes, atrial factor. वैसोप्रेसिन एएनएफ कॉजेज सेम इम्पैक्ट नहीं, दोनों ऑपोजिट है ना. एक वैसोप्रेसिन कॉन्स्ट्रिक्टर है, एएनएफ क्या है, डायलेटर. ठीक है, वैसोप्रेसिन इज कॉन्स्ट्रिक्टर, एएनएफ इज अ डायलेटर. सो ये गलत है. ठीक है, द juxtaglomeralar cells of kidney produce peptide hormone called erythropoietin. Erythropoietin, this is correct. Endocrine cells present different caseous secret four major peptide hormones. This is also correct. Okay, गैस्ट्रिक करेक्ट निकालने को बोला है, राइट. करेक्ट ऑप्शन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इनहिबिट, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इनहिबिट करता है, तो ये गलत है. सिक्रेटिन्स एक्ट्स ऑन पैनक्रियास एंड हेल्प्स न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम. यस, ये वाटर सिक्रेट करता है और बाइकार्बोनेट. ठीक है, वाटर न्यूट्रलाइजेस द एसिड वेयर बाइकार्बोनेट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, तो ये वाला करेक्ट है. ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स इज सिक्रेटेड ओनली बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. नहीं, ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी करता है, तो ये वाला गलत है. तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली बी. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द इनकरेक्ट मैच. इनकरेक्ट मैच यहाँ पे प्रोटीन हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड, ये नहीं, ये तो स्टेरॉइड हार्मोन है, तो पहले यही रॉन्ग है. स्टेरॉइड, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल, ये करेक्ट है. आयोडाइन, दिस करेक्ट. अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, एपिनेफ्रिन, दिस इज आल्सो करेक्ट. Now select the correct peptide hormones bind to the membrane bound receptors and generate second messengers like CMP to regulate cinema. This is correct. Steroid hormones bind to membrane bound receptors. नहीं, steroid membrane bound नहीं है, वो इंट्रासेलुलर होता है, उसका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है, तो ये गलत है. हार्मोन रिसेप्टर्स स्पेसिफिकली बाइंड टू, यस, हार्मोन रिसेप्टर्स बाइंड टू देयर स्पेसिफिक हार्मोन्स ओनली. ठीक है, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी. Coming to the next question, select the incorrect. IP3 is a secondary messenger और CMP है primary messenger. नहीं, IP3 CMP both ही क्या है, both are secondary messengers only, तो ये वाला गलत है. Cyclic AMP is generated by hormones which interact with membrane receptor. This is correct. Hormone receptor complex formed by membrane receptor. This is also correct. IP3 and CMP are secondary messengers, regulate cellular metabolism. This is also correct. Okay, coming to the next question. अच्छा, यहाँ से आपको करेक्ट निकालना है. Hormones that binds to membrane bound receptor typically do not the target cell. Yes, secondary messenger generate करता है. Iodothyrins interact with intracellular receptors to modulate gene expression. Yes, iodothyrins का सेल के अंदर में रिसेप्टर है. सेकेंड मैसेंजर like IP3 and calcium are involved when the hormones bind to intracellular. नहीं, intracellular receptors नहीं होगा, ये extracellular receptors होगा, तो ये गलत है. Hormone receptor distribute only on the cell membrane. नहीं, ये इंट्रा भी होगा ना, इनसाइड द सेल भी होगा, तो ये वाला क्या है, गलत है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली ए एंड बी. ओके, मैच द फॉलोइंग करना है. इंसुलिन आपका डायबिटीज मिलिटस होगा. ठीक है, फिर थायरॉक्सिन, थायराइड के लिए क्या होगा, गॉइटर होगा. ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकुलर्स के लिए क्या होगा, एडिसन डिजीज, राइट, एंड ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगेली. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 2. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. उसके बाद कॉर्टिसोल क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस करेगा. एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर, एंड कैटेकोलामाइन इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 3. नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिन हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ HCl. सिक्रेटिन क्या करता है, सिक्रेटिन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट. कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन एक्ट्स ऑन गॉल ब्लैडर, एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिट्स ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 3. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको मार्क करना है. ठीक है, एपिनेफ्रिन डू नॉट प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेंजर्स. एपिनेफ्रिन डू प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेंजर्स. ठीक है, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है. ठीक है, तो ये वाला गलत है. इंसुलिन डेफिशिएंसीज और इंसुलिन रेजिस्टेंट रिजल्ट्स इन डिजीज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस. दिस इज करेक्ट. थाइमोसिस प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. दिस इज आल्सो करेक्ट. ठीक है, द पिट्यूटरी हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यूज एंड एक्टिविटीज ऑफ पेरिफेरल न्यूक्लियस. दिस इज आल्सो करेक्ट. तो यहाँ पे कौन सा रॉन्ग है, only one is wrong. And I want to tell you, pituitary hormones regulate the growth and development of somatic tissues and activities of peripheral endocrine glands. ये समरी में है. ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन एंड समरी पढ़ना ही पढ़ना है. करेक्ट है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. ठीक है, राइट. सो थायराइड, थायराइड क्या बनाएगा, थायराइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिटेनिज्म, राइट. एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करेगा. पिट्यूटरी मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिनियल मेलाटोनिन. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 4. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करेगा,
ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स क्या करेगा, इंसुलिन, लैक्टिक सेल्स क्या करेगा, एंड्रोजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इंसिपिडस, ऑब्वियसली डायबिटीज इंसिपिडस, एंटी डायबिटिक हार्मोन, ग्रेव्स डिजीज आपका हो जाएगा थायराइड के लिए एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर, राइट, एंड डायबिटीज मेलिटस इज इंसुलिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हाइपोथैलेमस क्या होगा, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन हो जाएगा। एंटी रेपिट्यूटरी क्या होगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो जाएगा। टेस्टिस क्या होएगा, टेस्टिस एंड्रोजन, एंड ओवरीज एस्ट्रोजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो मैच द फॉलोइंग। ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन में रहेगा, वैसोप्रेसिन या फिर ADH, ये क्या आ जाएगा, स्टिमुलेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल ट्यूबल्स इन द नेफ्रॉन। कॉर्टिकॉइड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, एंड थायरॉक्सिन रेगुलेट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलाटोनिन इंड्यूसेस ओव्यूलेशन। ओके, मेलाटोनिन किसको रेगुलेट करेगा, मेलाटोनिन रेगुलेट करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को, इट विल रेगुलेट दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फिर प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मैमरी मिल्क प्रोडक्शन, मैमरी ग्लैंड। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, इंड्यूस ओवुलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स, FSH, डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 71 का 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक इनहिबिटर, सो इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिन क्या करेगा, सिक्रेशन ऑफ पेप्सिनोजन, NaCl, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, राइट, एंड सिक्रेटिन क्या करेगा, स्टिमुलेट द एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। दिस इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, पीनियल ग्लैंड क्या मेंटेन करेगा, 24 आवर बॉडी रिदम। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन, राइट, एंड थाइमस क्या करेगा, रेगुलेट ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मिलेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रेनिन आपको किडनी में मिलेगा, एंटी न्यूट्रियल फैक्टर हार्ट में मिलेगा, इंसुलिन आपको पेनक्रियास में मिलेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। ओके, एपिनेफ्रिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल मेडुला, ठीक है, एंड कॉजेस इंक्रीज इन द हार्ट बीट। सो एड्रिनल मेडुला एंड कॉजेस इंक्रीज इन द हार्ट बीट। Which of the following hormone is amino acid derivative? Epinephrine is the amino acid derivative. Thymosins play a major role in differentiation of T lymphocyte which provide cell mediated immunity, ठीक है। Okay, coming to the next question, Addison disease due to adrenal underactivity, okay, glucocorticoids क्या करेगा, glucocorticoids stimulate gluconeogenesis, inhibit cellular uptake and utilization of amino acids, involved in maintaining cardiovascular system, all of them. स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या करेगा, दे हैव द रिसेप्टर्स विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है, दे हैव रिसेप्टर्स अलोंग द न्यूक्लियस। लाइपोफोबिक नहीं, लाइपोफिलिक होता है, राइट, सेल सरफेस रिसेप्टर नहीं, इंट्रासेलुलर होगा, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये भी गलत है, बिकॉज T3 T4 भी क्या है, स्टेरॉयड ही है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 81. Both adrenaline and cortisol are secreted in response to stress. Which of the following statements are true? They act to increase the blood vessels. ये correct है. They are secreted by the adrenal cortex. This is wrong. ठीक है, एक मेडुला एड्रेनलिन मेडुला से आता है, ठीक है। सिक्रेशन स्टिमुलेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये गलत है, ACTH करेगा, ठीक है। दे आर सिक्रेटेड इनटू द ब्लड ड्यूरिंग सेक्रेशन ऑन स्ट्रेस, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1। ओके, इनकरेक्ट मैच पूछा है, मेलाटोनिन स्लीप वेक साइकिल करेक्ट है, फॉलिकल स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ वेन फॉलिकल स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी, दिस इज करेक्ट। एड्रेनलिन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, करेक्ट है, ग्लूकोजेनिक इफेक्ट। प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रेगनेंसी मेंटेन, प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन। सो ये वाला गलत है, तो 82 का हो जाएगा आपका 4। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरग्लाइसेमिक एंड हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपरग्लाइसेमिक मीन्स ग्लूकोज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एंड हाइपोग्लाइसेमिक क्या हो जाएगा, ग्लूकोज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो इंसुलिन तो डिक्रीज है, ये नहीं। एड्रेनलिन यस इंक्रीज करेगा,
ग्लूकागोन भी इंक्रीज करेगा, तो ये वाला गलत है। एड्रेनालिन यस इंक्रीज करेगा, इंसुलिन यस डिक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, दिस इज करेक्ट। ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन नहीं, तो 83 का क्या हो जाएगा 3। 84 which group of hormones is related to cytoplasmic bound receptors? cytoplasmic bound receptors कौन होगा? साइटोप्लाज्म में थायराइड एंड एस्ट्राडाल स्टेरॉइड है। ओके, आफ्टर एवोल्यूशन रैप्चर फोकस सीक्रेट हार्मोन्स दैट हेल्प इन प्रेगनेंसी सपोर्ट, ये करेक्ट है। यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, सोडियम का यूरिनरी एक्सक्रीशन कौन रेगुलेट करेगा? ऑब्वियसली रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये कहाँ से होगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो 86 का 2। 87 फाइंड आउट द करेक्ट मैच। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फाइट इंड्यूसेस कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं डायलेशन होता है, ये वाला गलत है। बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास हार्मोन्स एक्ट्स ऑन मसल्स इन ग्लाइकोजेनोलाइसिस, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास से क्या निकलता है? इंसुलिन, इंसुलिन में ग्लाइकोजेनोलाइसिस या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होता है, सो दिस इज रॉन्ग। टेस्टिस हार्मोन इंड्यूसेस कैटाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन, कैटाबॉलिक नहीं है, एनाबॉलिक है, this is anabolic, so this is also wrong. Thyroid hormone induces PMR, in case sodium potassium permethrin binds intercellular, so this is correct. So 87 क्या हो गया 4। Coming to question number 88, which of the following does not secrete hormone? स्प्लीन ही है, क्योंकि टेस्टिस में भी हार्मोन मिलेगा, ये तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हो गया, ये भी हार्मोन मिलेगा, करेक्ट है। सो द ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 89, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेजर बायोलॉजिकल केमिकल सब्सटेंस? गैस्ट्रीन है, रेनिन है, ऑक्सीडेशन क्या नहीं होगा? क्रिएटिन, ये एटीपी प्रोडक्शन में चाहिए, ठीक है। सो 89 का हो जाएगा 4। एंड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 90, अगेन यू हैव टू मैच एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन, डायबिटीज इंसिपिटस दिख रहा है, दिस इज करेक्ट। एड्रेनोकॉर्टिकोटिक हार्मोन पिट्यूटरी, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस, टेस्टोस्टेरोन वेसोडाइलेट, टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होता है वेसल्स डायलेट हो जाता है, सो दैट मोर ब्लड फ्लो कैन ऑकर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। सो दिस वाज योर सॉल्यूशन फॉर दिस टेस्ट, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, थैंक यू।